Hello and welcome to Kashmir Now. I'm your host Shreya Savijay. Let's take a look at some stories of this week's episode. Transporters in illegally occupied Gilgit-Baltistan hold a press conference to highlight the corrupt practices of Excise Department. Jammu and Kashmir's Pulwama district soon to become the pencil district of India. Indian Army organizes Machhal Mela in Kupwara to strengthen their relation with the local populace. And later, we'll take you to get enthralled with the beauty of Puri's Golden Beach in our special edition of Incredible India. Be it providing basic amenities to its people or fulfilling their rightful demands, the government of illegally occupied Gilgit-Baltistan, which works in cahoots with Islamabad, has always lagged behind. It is only concerned with filling its own coffers rather than doing something for the betterment of its people. As a result, time and again, people have to come forward to demand their rights. Recently, a press conference was organized by the Gilgit-Baltistan Transport Owners Association to highlight the apathetic attitude of the government as well as Excise Department towards them. We bring you a report. Fed up with the mistreatment of Excise Department in illegally occupied Gilgit-Baltistan, the Transport Owners Association of the region recently held a press conference where they put forward their plights and raised their voices against the atrocities of the department. Highlighting the discrimination they are facing, they said that while in every part of Pakistan, transporters are facilitated, but in Gilgit-Baltistan, they are being suppressed both by the government and excise officials who just want them to follow their commands without questioning them. एक्साइज सेक्रेटरी के साथ भी हमारे कई दफा बारहा मीटिंग हुई तो सेक्रेटरी साहब ने सिर्फ लॉलीपॉप देने के अलावा कोई अमली काम नहीं कर सका। तो हमने मजबूरन ये स्टेप उठाना पड़ा कि भाई दुनिया में केपी, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में जहां ट्रांसपोर्ट चलती है, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करती है। सिर्फ जीबी गवर्नमेंट और जीबी एक्साइज ट्रांसपोर्ट को दीवार के साथ लगाने के अलावा किसी कोई और उनकी सोच ही नहीं। कैसे इनको दबाएं, कैसे इनको ट्रांसपोर्टरों को दबाएं कि वो हाथ से हाथ मिला के चलते रहें, तो उस पे हम नहीं चल सकते। The government of illegally occupied Gilgit-Baltistan that works on the whims and fancies of Islamabad has never shown any concern towards the problems of its people. Be it medical, education or the transport, almost every sector is lying in shambles. As per the members of Gilgit-Baltistan Transport Owners Association, even after paying the tax in advance to the government and having the proper documents, they are being charged hefty fines and threatened in case they refuse to give. ट्रांसपोर्ट सेक्टर वाहिद सेक्टर है जो गवर्नमेंट ऑफ गिलगित-बल्तिस्तान को एडवांस टैक्स पे करता है हर साल। उनको फैसिलिटेट करने के बावजूद मुख्तलिफ जगहों पे हर जिला में हमारे ड्राइवर्स हो गए, ट्रांसपोर्टर्स हो गए, ऑफिस जाके सील करना, थ्रेट करके भत्ते लेना, रूट परमिट के ऊपर जुर्माने, कभी फिटनेस के जुर्माने, कभी किस चीज के जुर्माने। 1000-1500 लिया तो वो चीज हलाल हो गया, आप चल सकते हो। 5000 दिया आप ऑफिस चला सकते हो, 5000 नहीं दिया इशू उठाया तो ऑफिस सील होगा।
तो ये चीजें नाकाबिल बर्दाश्त चीजें थी। The members also said that they want an approval on their Charter of Demands, which is lying pending in the offices of Chief Minister and other government officials. They threaten to intensify their actions if their demands are not met. हमारे जो जेनमन मुतालबात सीएम साहब के पास भी पड़े हैं, सीएस साहब के पास भी पड़े हैं, गवर्नर के पास भी पड़े हुए हैं। अगर इन जो हमारा चार्टर ऑफ डिमांड उनके पास गया है, अगर उनमें से एक चीज, एक इंच हम इस पीछे नहीं हटना। अगर हल हुए सो बिस्मिल्लाह, नहीं हुए तो फिर अगला स्टेप उठाएंगे हम मशवरत से। फिर उसका जो भी रद्द अमल आएगा तो उसकी गवर्नमेंट और एक्साइज डिपार्टमेंट ही जिम्मेदार होगी। The situation of almost every sector in Gilgit-Baltistan has only deteriorated ever since it was illegally occupied by Pakistan. The successive governments in the region too have just passed the ball from one court to another and have done nothing for the betterment and development of any sector. Next, we move to Jammu and Kashmir, whose Pulwama district is turning out to be a hub for making pencil slats in India. Today, almost all the major pencil-making companies in the country procure these slats from here. Moreover, amid these testing times of pandemic, production of pencil slats has become a major source of employment generation in the district. A report. Every time you pick up a pencil to write, chances are you may be holding a piece of Kashmir. This is because a significant portion of the wood in making the country's top brands of pencils come from South Kashmir. In Ukhu village of Pulwama, dozens of units are engaged in the preparation of pencil slats from a special poplar tree that grows only in the wetlands of the district. One of the unit owners, Manzoor Ahmed Alai, who has been in this business since 2010, said that first only the blocks were made at his unit, but later he got the machines to make pencil slats. हमारे यहाँ कम से कम 100 से लेकर 150 तक मजदूर काम कर रहे हैं, जिनमें कश्मीरियों के साथ साथ बाहर के भी मजदूर काम कर रहे हैं। हम जो ये माल बनाते हैं बाहर रियासतों में पेंसिल बना के काम आता है। साथ ही हम गवर्नमेंट के बेहद मशकूर है जो हमें वक्तन फ़वक्तन अपना ताउन पेश कर रहे हैं। खासकर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत मदद कर रही है। हमारा मंशूर यही है कि इस काम को हम आगे बढ़ाएं और बेरोज़गारी ख़त्म करने का एक ज़रिया बन जाएगा। Pulwama district earlier used to supply only wood to pencil makers, but now, as it has started making pencil slats, thousands of people, both men and women, are getting to earn their livelihood, especially among these tough times of pandemic. इस फैक्ट्री की वजह से हमारा रोज़गार बन गया, हमारे घर वालों को भी इससे बहुत फ़ायदा, हमें भी फ़ायदा हुआ कि हम बाल बच्चे वाले हैं, हमारी फैमिली इसी फैक्ट्री के ज़रिए से चल रही है और बहुत अच्छे से ये काम कर रही है। यहाँ फैक्ट्री जो है ये बहुत अच्छे से काम कर रही है। इसकी वजह से मुझे भी एक रोज़गार मिल गया, मैं भी अब फार्म वार्म नहीं के पीछे नहीं पड़ गया, मैंने भी अपने रोज़गार का इंतज़ाम यहाँ ही किया है। मगर मैं अब ये चाहता हूँ जो हमारे स्लेट यहाँ से बनता है इसकी, मेरा मतलब है इसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए। Kashmir Valley supplies 90% of pencil slats to the country, out of which 80% is from Pulwama district alone, which qualifies it to be called as a pencil district of India.
These slats are even supplied to Hindustan Pencils, which makes the Natraj and Apsara brands and is the second biggest pencil manufacturer in the world. हमारे डिस्ट्रिक्ट में टोटल जो यूनिट्स हैं पेंसिल स्लेट्स के वो है 17, उनमें से 11 ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है और 6 अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है। यहाँ पुलवामा में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है और जितने भी लोग इसके साथ इन्वॉल्व हैं उससे ज़्यादा दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स और बाहर से आए हुए लोग ज़्यादातर उनको एम्प्लॉयमेंट यहाँ मिल रही है। पिछली बार अगर हम कोविड की बात करेंगे, कोविड में जो यहाँ स्ट्रैंडेड हमारे लेबरर्स थे उनमें 80% बाहर से थे यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ पुलवामा के ही लोग बिल्कुल मुस्तफ़ीद नहीं हो रहे इन स्कीमों से, दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स और बाहर से पूरे कंट्री से आके लोग यहाँ रोज़गार हासिल करते थे। At present, 60% of pencil production work is done in the units at Pulwama's Lassipora, one of the Kashmir's biggest industrial estates, set up over 300 hectares in 1984. And now, the unit owners are keen on making the whole pencil in Kashmir, which will not just create more jobs, but also make it a hub of pencil production in India. The Indian Army keeps on organizing a number of events and seminars to interact with the locals. From medical camps to cultural seminars, the armed forces in India keep on organizing different kinds of events for getting a better understanding of the people in the region. In a similar kind of initiative, Army organizes Machhal Mela every year in Kupwara district of Jammu and Kashmir. Have a look. Young children appeared all excited and happy as they marched smartly with honor and respect for the country in their hearts. This scene was witnessed during the famous Machhal Mela, which was recently held in Kupwara district of Jammu and Kashmir to encourage youngsters to participate in cultural and extracurricular activities. Organized by the Indian Army under the aegis of Machhal Brigade and Vajra Division, the annual event is an attempt to bolster their relations with local population, especially the youngsters. जो यहाँ पे मच्छल मेला है ये हर साल होता है और इससे हमें काफ़ी लोगों को फ़ायदा होता है, चाहे क्रिकेट हो, चाहे वॉलीबॉल, चाहे पूरी रेस हो, चाहे छोटे बच्चों को ये मनोरंजन हो, इससे हमें बहुत खुशी मिलती है और सपोर्ट मिलती है। Thronged by the people from various villages like Machhal, Pushwari, Dudi, Dabbal, Mishri Bahik and Katwar of Kupwara district, this time the mega event saw a footfall of around 1,500 villagers. As a part of the festival, a number of games and sports competitions were held for the youngsters. Apart from that, a number of innovative races like Lemon Spoon Race and Jalebi Race were also organized for small children who enthusiastically participated in them. Later, the winners were facilitated by the chief guest of the event, Major General Amardeep Singh Ahuja, who laid stress on the importance of hosting such events. अब इनकी दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें हमारे को कैसे पता लगेंगी? ऐसे फोरम्स के अंदर जब आपस में मिलते हैं, आपस में बातचीत होती है, आपस के अंदर खेलते हैं, कूदते हैं, उसके अंदर हमारे को इस इलाके का जो है पल्स जो है वो हमारे को मालूम रहती है और इनको एक मौका मिल जाता है कि जो दिक्कतें इनके सामने आ रही हैं उसको जो है वो हमारे को बता पाएँ।
Meanwhile, the students of Machhal, Pushwari and Dappal villages presented a wonderful cultural program. हमारा जो यंग लड़का है वो उसमें लग जाता है, उनका हेल्प होता है, कुछ नगद हेल्प होता है, कुछ जिन्नस हेल्प होता है और खिलवाता है फौज। और फौज का हम बहुत शुक्रगुजार है, खासकर 56 ये आरआर का शुक्रगुजार है। जब से आया तब से ये मेला शुरू हो गया। Altogether, the armed forces put a great show that ended with a Kashmiri folk song which succeeded in bringing the audience to the edges of their seats. There are several central government schemes benefiting the people of Jammu and Kashmir. The Pradhan Mantri Awas Yojana is one among them. Under the scheme, many poor families in Udhampur district received money for the construction of concrete houses. So, let's see how PMAY is turning out to be a life changer for the poor people. Families living in kacha houses in Udhampur district of Jammu and Kashmir are now having houses made of bricks and concrete. These Pakka houses have separate kitchen, toilet and a living room. All this has been possible because of Pradhan Mantri Awas Yojana scheme that has provided funds to these families for constructing new houses. हमारी कोशिश है जो गरीब लोग हैं जिनके कच्चे मकान हैं हम उनको पक्का घर देने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी यही कोशिश है कि जो गरीब से गरीब जो इस स्कीम का बेनिफिट ले। और मैं शुक्रिया करता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और इस साल मैंने 18 लोग कवर किए हैं, 18 घर हमने पक्के बनाए हैं, कुछ का काम चल रहा है। नेक्स्ट ईयर हमने 12 रखे हैं। ऐसे जैसे 5 साल तक मैं कोशिश करूंगा कि मेरे गांव में कोई भी घर कच्चा नहीं रहे। Under this scheme, 18 Pakka houses have been constructed for citizens who fall below the poverty line category in Dabra village of Udhampur district. The beneficiaries were given an amount of 1.3 lakh rupees in 3 installments for the construction of new house or repairing of the old house having less than 30 square meter plinth area. They're effusive in their praise for the government for introducing such a landmark initiative. जो इस मोहल्ले में हम रहते हैं उसका नाम कोड़ी मोहल्ला है और जो हमें मकान दे रहे हैं वो PMAY किसे दे रहे हैं। पहले हम कच्चे मकान में रहते थे, अब हमें खुशी है कि हमें पक्का मकान मिल गया है। पहले बारिश पड़ती थी तो पानी अंदर आता था और गर्मी भी बहुत लगती थी। हमारी पंच और सरपंच और पंचायत ने हमारा बहुत साथ दिया है और सरकार ने हमारी मदद की है। Launched in June 2015, the Pradhan Mantri Awas Yojana aims to provide housing to all in rural and urban areas by the year 2022. All those who have an annual income of less than rupees 3 lakhs are eligible to enroll for the scheme. Till now, around 1.53 crore Pakka houses have been constructed under the scheme in India. In the territory of Jammu and Kashmir alone, 12,078 houses were constructed during the year 2019-20. The scheme has turned out to be a boon for the poor people who are now getting Pakka houses, due to which their families, especially children, can live safely in all kinds of weather conditions. Shelter is one of the most basic needs
and the way the central government is taking steps to fulfill this need of the people is filling hopes in them for a better and brighter future. Next, we move to our section of Incredible India, where today we'll take you to calm your senses with the mesmerizing beauty of Odisha's Golden Beach. Also known as Puri Beach owing to its location, it has recently been accorded the prestigious Blue Flag tag, making it one among the 8 beaches in the country who have been granted this coveted eco-label. Located on the shore of Bay of Bengal, the Golden Beach of Puri is a stretch of fine golden sand away from the din of the city. Untouched and desolated, the beach boasts of a perfectly peaceful environment with only the crashing of sea waves to give you a company. Moreover, with the temple of Lord Jagannath located nearby, the beach is one such destination that offers both spiritual salvation as well as the thrill of nature. On October 11, 2020, the beach was awarded the prestigious Blue Flag, which is a highly recognized eco-label in which a beach has to meet 33 criteria fixed by the Foundation for Environment Education Denmark. पुरीर पवित्र बेलाभूमि को अंतरराष्ट्रीय बेलाभूमि मान्यता जो ब्लू फ्लैग बीच कह जाए सेटा मिली से मो समस्त को हृदय शुभेच्छा जनाऊँगी बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन जनाऊँगी आमर यही बीच मान्यता बेलाभूमि ब्लू फ्लैग मान्यता जो जो सहयोग देइछंती जे माने विशेषकर मोर पुरीर वासी और मोर टीम राइट फ्रॉम मो बीच कैंपेन रू नहीं करी से मु बहुत बहुत कृतज्ञ और एटा को मेंटेन करिबा दिगरे आपण समस्तंकर कंटिन्यूड सहयोग मिलिबो सेटा मोर विश्वास। The beach has almost all the core infrastructure such as public toilets, changing and shower room, watchtowers, solar lighting system, sitting arrangements, demarcation of safe swimming zone, besides mechanized pollution abatement services, beach safety and other security measures have also been developed at this stretch. Besides peripheral activities such as approach road, fencing with plantation, parking, sand sculptures, water supply, jogging track, installation of CCTV cameras and public address system have been executed by the state government at the beach. Visitors as well as tourists feel happy to enjoy such innumerable facilities while enjoying the serenity of the beach. घूमने के लिए भी बहुत अच्छा जगह है, बीच बहुत क्लीन है और अभी सब सुविधाएं हो चुकी है, जैसे कि शेड लग चुका है, बैठने के लिए आराम से आप एंजॉय कर सकते हैं एनवायरनमेंट को। और फिर पहले लेडीज़ लोग के लिए सुविधा इतना नहीं था, अभी बहुत हो चुका है, जैसे टॉयलेट्स वगैरह, फिर रेस्ट रूम और पार्क भी है। आप योगा भी कर सकते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग में, नेचुरल मतलब नेचर का आप एंजॉय कर सकते हैं उसको। The works of internationally recognized local artist Sudarshan Patnaik also form a source of major attraction at the beach. Recently, to celebrate the new feather in the cap of Odisha's tourism, he made a gigantic sand art. हमें तो जरूर बहुत ये खुश लगा कि हमारा जो पुरी का गोल्डन बीच है उसको सिलेक्ट किया गया है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि हमारा जो बीचेस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्लीन रख सकते हैं और उसके साथ पर्यटन को भी और बढ़ावा दे सकते हैं। और मैं ज़रूर ये कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि जो 8 बीचेस
हमारा देश में सिलेक्टेड हुए हैं ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए। Lately, the district administration of Puri also launched a public health program, More Beach Yoga, at the Golden Beach. First of its kind initiative, this two-day beach campaign was aimed at promoting public health and environment education in a novel way amidst COVID-19. आज ये जो प्रोग्राम हुआ योगा के बारे में, उससे हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और मतलब नेक्स्ट में भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत उपयोगी होगा। ये पूरी के गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव है जो लोगों के लिए बहुत अच्छा है। Apart from Golden Beach, there are a number of picturesque beaches that the Puri city offers to its visitors. The first one is Baleswar Beach, located at the mouth of Nuanai River. This beach is known for its religious sanctity and natural splendor. Sunbathing, swimming, and water sports are popular ways to spend time on this beach. Balighai Beach is another one in the list. Away from the hustle and bustle of the city, this beach is loved for its clean sands and magnificent sunset and sunrise. A number of migratory birds visit it in winter, making it a bird watcher's delight. Swargdwar Beach, which literally translates to the door to heaven, is also a major tourist attraction located very close to the Jagannath temple. Blessed by a peaceful and surreal ambience, this beach is believed to be the bathing site of Sri Chaitanya Dev, a revered Vaishnava saint. With such an impressive line of beaches, Puri garners tourists from across the world, making it one of the most favored destinations for a wonderful holiday with friends and family. So, that's all we have for you in this week's episode. Till we see you next week, it's goodbye from the entire production team.